All right. A very good morning, WHHians. क्या बोलते हैं? हम ट्राई कर रहे हैं WHHians. WH2ns? What is better? What do you think is better? Happy homemakers is WHH. better. WH square. Yeah. WH square. WH squarians. This is a better one. Yeah. आज नामकरण कर लिया हमने अपने गैंग का. So a very good morning and welcome back again. I know it's been a long time, but we are back with a bang. You know, जब कुछ देरी होती है तो अच्छा ही होता है. So you get something better. So आज power pack हमारा होने वाला है session with none other than Bhavana Sood, one of my darling friend and oldest member of WHH I can say, जो पहले दिन से पहले जो हमारा वर्कशॉप हुआ था उस दिन से लेके आज तक वो हमारे साथ है. आई डोंट थिंक शी हैज मिस्ड, हाँ अनलेस बीच में कुछ हुआ तो, अदरवाइज शी डजंट मिस हमारे सेशंस. एंड हैविंग हर ऑन बोर्ड इज अ ब्लेसिंग फॉर अस बिकॉज इतना नॉलेज है भावना के अंदर. आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ द मेमोरी शी हैज, द नॉलेज शी हैज. यू गिव हर अ टॉपिक, शी विल गो ऑन एंड ऑन, शी नोज अबाउट एवरीथिंग. आई डोंट नो उसको ऐसी कोई चीज है जो उसको नहीं मालूम है, बट ये पूरा जब भी मैं जाती हूँ इट्स लाइक अ न्यू लर्निंग फॉर मी. आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम भावना. So Bhavna, welcome back. Thank you so much for being here with us all the time and for listening to our queries and giving us such insightful knowledge. I love you for that. Thank you so much, Aisha. Amazing, yaar. I mean, you are my inspiration. You were the one who pushed me to do a lot of things. And I thank you for that. And I thank you for being always there with me. And Alia is amazing. Everyone here is an inspiration in itself. You know, I see so many people who are doing so well, and especially following their passions. And this is something you inspire in everyone. Thank you, Bhavna. Thank you so much. And थोड़ा ज्यादा preachy हो जाए तो mind मत करना, because you know I'm a counselor, तो मेरा nature है कि you know I tend to get a little preachy. We love that though, isn't it, Alia? Alia Hi, fan. good morning, everyone. Welcome, Bhavna. It's so lovely to have you on board. And as Aisha has told, Bhavna is an inspiration in herself to everyone. Especially, she motivates me a lot. And I really admire her knowledge, and she has so much vast knowledge. And the work she's doing is just awesome. And Mashallah. I'm sure this session is going to be a very amazing session for all of us. Yes, Yeah, everybody. over Good to you, morning, dear. good afternoon, everybody. Hi, Bhavna. How are Hi, you? Alia. Everybody is doing fine. Thank you so much for gracing a session, Bhavna. It's been a pleasure. Thank you so much. And I admire you really for being such a great counselor for the children. Thank you so Thank much you. again. And we just wish you all the best. I had a small interaction with you during my daughter's admission process, Yes. and the experience I had was just amazing, because without knowing you personally, and I just pinged her for some one message, and her immediate reaction was, please call me. And I was like, these kind of people are so few, you know. So just you message and they're like, please call me. So I was like very happy. So I just wish you all the best, and over to you. Thank you. Thank you. Thank Yeah. you. So, hi, welcome everyone. And I am a counselor. I'm an education counselor. So I handle mostly curriculum, school, career advice, grade 11, 12, 9, 10, career pathways, everything. So, yes. So I do all of that. I sometimes do parenting coaching as well. I know most of the people here who are into education, into life coaching, into parenting coaching, and a lot of homemakers as well. And one thing जो मुझे अच्छा लगता है इस ग्रुप के बारे में, I mean, I hope English and Hindi both is okay. Yes, yes. So one thing I like about this group is that it's happy homemakers. Because homemakers and happiness generally साथ में नहीं जाते. Generally. Because being a homemaker, सबसे पहले आता है, am I useless? Am I not doing enough? I am not able to contribute to the house. मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है? मेरी डिग्रीज का क्या फायदा है?
all the questions and उसके ऊपर all that procrastination जो शुरू होता है, and it goes into a negative spiral. One thing as homemakers we need to understand कि हम homemaker हैं इसीलिए हमारे पार्टनर सक्सेसफुल है. हम होममेकर्स हैं इसीलिए हमारे बच्चे सॉर्टेड हैं. Ask those children जो बेचारे घर आते हैं नानी के पास, and nothing wrong with it. Every home to itself. जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि working women कुछ गलत कर रहे हैं या होम मेकर्स कुछ सही नहीं कर रहे हैं. Nothing of that sort. Every household का एक equation होता है. But at the end of the day, when you talk about kids' perspective, they do want to come home to one parent. And it is not necessarily mummy हो या पापा हो. Generally अपना Indian subcontinent में it is mummy. Because पापा लोग जॉब पे जाते हैं. Internationally ऐसा नहीं है. But generally they want to come to home to a smiling parent. They want to come home to a food on the table and a parent listening to them. आज स्कूल में क्या क्या हुआ, ये हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ. Someone asking them homework में क्या है, क्या किया तुमने, ये ग्रेड आए कम आए तो क्यों आए. Something of that sort. So they want that. So homemakers होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है that you are there at home managing the home front. इसीलिए husbands जाके पूरा पूरा दिन काम कर सकते हैं without even thinking twice कि आज 9 बजे घर जाके कौन मिलेगा. Right. इसीलिए and you are there to take care of the children single-handedly if husband is working 12 hours a day, 16 hours a day. So what you are contributing to the family may not be monetary, but it is much more than what, much more than what you think, your contribution is. So never feel guilty and never feel that, okay, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ. Know your self-worth. क्योंकि I know most of the moms जो school and pick and drop करती हैं, उनकी हालत देखनी चाहिए. सुबह then again दोपहर को लेके जाना, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, mom's jobs never finish. That is true, Bhavna. Are you able to hear me? Yes. Yeah. So, yes. So, guys, like you know now, today's topic is about well-being and it's about parenting. So, women well-being is something that we are going to focus on. So, Bhavna, I want you to know from you कि what does this well-being mean? और ये women का well-being इतना ज़्यादा important क्यों होता है? जब हम well-being बोलते हैं, काफी बार हमने पढ़ा है, women's well-being is so important. But what is this well-being and why is it so important? And अगर ये important है भी तो हम जैसे लोग जो नॉर्मल लोग हैं हाउ कैन वी अचीव दैट ओवरऑल हम कैसे अचीव कर सकते हैं ये वीमेन ये वेलबींग वाला जो कॉन्सेप्ट है सो आई वांट यू टू शेड लाइट ऑन दैट. Okay, according to my perspective, this is because it's all about perspective. So according to my perspective, well-being can be defined in two words mainly: happiness and content. Okay, and both the things have to be on three fronts: physical, emotional and mental. Okay, अगर आपने सब कुछ अचीव किया है, you are on top of your business, you are someone who's earning very well, who has a very successful career, and still you're not happy from inside, then you need to work on your well-being. Well-being का मतलब होता है आपने जो कुछ भी अचीव किया, आप रोज सुबह उठते हो, रोज शाम को सोते हो, उससे पहले throughout the day you are happy with what you are doing and what you have done, and you are content कि हाँ, this is something I wanted to achieve and this is what I have achieved on a daily basis. That is well-being. Well-being is not being just successful so much and yet feeling empty inside. Well-being is not about
oh, I have achieved so much, but oh my God, I still have to reach that milestone and I cannot think enough कि मैं कैसे करूँ. No. Well-being is when you go to sleep at night, you're happy about how you spent your day, and you're content कि okay, tomorrow I'll try more, but today what I've done, I'm happy about. That mental state of relaxation has to be there. That is well-being. Because happy state of mind or content state of mind is happy family and happy state. Exactly. क्योंकि हम लोग अगर हम बात करें फिजिकल वेलबींग की, तो फिजिकल वेलबींग ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेज, रनिंग, और कुछ नहीं तो वॉकिंग विद फ्रेंड्स, एनीथिंग, इवन 7 मिनट के हिट वीडियोस जो यूट्यूब पे आते हैं, एनीथिंग which gets your blood pumping, your heart pumping. Emotional well-being is where the two factors that I said, कि भाई you are happy and you are content. Mental well-being is okay, I did so much, I wanted to achieve this, okay, now I'm going to work on much more. वो अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है. वो अचीवमेंट ये भी हो सकता है कि ओके, कल मैं अपनी 3 न्यू फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करूं. वो अचीवमेंट ये भी हो सकता है कि कल मुझे जाके बीच में बुक पढ़ना है. अचीवमेंट का मतलब और सक्सेस का मतलब ये कभी नहीं होता है कि ओके, आई हैव टू रीच दिस प्लेस इन योर करियर, आई हैव टू रीच. नॉट ओनली दैट, अचीवमेंट कैन बी एनीथिंग. अचीवमेंट कैन बी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे कल 2 चैप्टर खत्म करने हैं, दैट इज एन अचीवमेंट. अचीवमेंट इज व्हाट यू डिसाइड, एंड उस अचीवमेंट का सक्सेस शुड बी योर पैरामीटर ऑफ सक्सेस. सोसाइटी का कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ सक्सेस नहीं है. Whatever you decide is the parameter of success, that is your success. You should not let कोई और डिसाइड कि मेरा हैप्पीनेस का पैरामीटर क्या है. नहीं नहीं, अगर मैं उस पार्टी में नहीं गई तो मैं खुश नहीं. क्यों भाई? अरे छुट्टियों में मैं स्विट्जरलैंड गई नहीं, मैं खुश नहीं हूं. क्यों भाई? यू कैन डिसाइड योर ओन हैप्पीनेस. तुम्हारा अगर पैरामीटर है मुझे छुट्टियों में स्विट्जरलैंड जाना है एंड यू वर्किंग फॉर इट, देन इट इज गुड. But just looking at others and deciding your happiness is not good. That is not mental well-being. You can define your own factors of happiness. You can define your own factors of success. मेरे लिए success है, my kids are getting into good careers. I am a successful mother. 10 people over a month call me and tell me, I'm so thankful to you for the advice you have provided. That is success to me. मुझे 50,000 लोग नहीं जानते, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. So you define your own parameters of success. You define your own parameters of happiness, and that is what well-being is all about. Well-being is about being happy with what you have achieved and striving to achieve more, but slowly. ऐसे भाग के, परेशान होके, stressed out होके नहीं. According to me, that is well-being. And why it is important for the women well-being is because एक वुमन अगर हैप्पी है, कंटेंट है, तो उसकी फैमिली हैप्पी. बिकॉज अपन ने नोटिस किया होगा, जब हम लोग चिढ़ते हैं तो वी टेक आउट आवर स्ट्रेस ऑन आवर चिल्ड्रन. Husbands don't or partners don't want to come back home and look at an irritated wife because वो already 12 घंटे ये सब झेल के आ रहे हो. And I'm not saying कि you have to be happy to keep them happy. No, you have to be happy from inside. If you are happy, you will motivate others to be happy. It is all about being positive, but being positive from the inside. Not कि okay, I am not happy from the inside, but ऊपर से I am showing very happy and positive. Eyes में दिखता है, आपके demeanor में आ जाता है. So it is important for a woman to be happy because she is what runs the nature, runs the family, runs the friend circle, runs everyone around her. She motivates everyone around her. We are nurturers.
So if we are happy and content from inside, हमारे आसपास सब कुछ happy रहता है. ये ना सही बोला भावना. Why I feel that is like जितने मैं मेरे नेटवर्क में माशाल्लाह से लोग हैं, आई बिलीव कि मेरे को पॉजिटिव लोगों का ना, भले उन्होंने डायरेक्टली मेरे को कुछ नहीं हेल्प किया, बस वो पॉजिटिव है, उनका ऑरा दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, यू नो. वो मेरे मेंटल वेलबींग के लिए हो या मुझे डिसीजंस करना है, आई हियर देयर स्टोरीज एंड आई सी व्हाट स्ट्रगल्स दे हैव गॉन थ्रू, एंड यू नो दैट हैज पर्सनली हेल्प मी. एंड आई चूज माई पीपल दैट वे, जो मेरे को पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, किसी को हेल्प करने में उनको खुशी होती है, ऐसे लोगों को मैं आजू बाजू घेरती हूँ. एंड इट हैज मेड अ होल लॉट ऑफ इम्पैक्ट, सो आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. एंड बीइंग हैप्पी एंड कंटेंट आर टू डिफरेंट थिंग. दैट ये मेरे को बहुत सालों के बाद पता चला था कि हैप्पी, मैं बोल रही थी लाइक यस आई एम कंटेंट, लेकिन देन देयर वाज अ डिफरेंस. लाइक तुम्हारा हैप्पीनेस वो थोड़ी देर के लिए होगा, कंटेंटमेंट इज लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम. You are content even with the little thing that you've got, वो ज्यादा खुशी देगी आपको, ऐसी चीज. So thank you so much, Bhavana. Thank you. Okay. Alia muted है. Alia? Yeah. Yes, Yeah. unmute. Sorry, I was unmute कर रही थी मैं. Now see, in throughout the world nowadays, we are hearing so much about health and well-being as the topmost agenda going on throughout the world. Everywhere you go, people are talking, countries are working towards health and well-being of all the people and all. So basically, like, I would like to know, and I think all our attendees also would like to know, how can we as women be a role in promoting this health and well-being? Okay. So one thing which I have always stressed on is that we can help each other, help other, help the well-being of other women is by creating circumstances which are, very conducive to their growth. Like suppose, जनरली अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, ओके दिस इज अपन हैप्पी होम मेकर्स हैं, ठीक है, वी आर ऑल्सो बिजनेस वुमेन. That means we either have employees with us or we are a part of any organization or collaboration. So every woman and every mother or every daughter or every whoever is working is going through a certain circumstances. वो घर पे हो सकता है, जैसे जैसे मदर्स हैं, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो मदर्स को जनरली जॉब्स मिलते नहीं हैं या उनको इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते. व्हाई? बिकॉज कंपनीज का एचआर में अगर जाके वो उनका क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, ओके डू यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन? यस. Okay, we'll think about it. Are you about to get married? We'll think about it. Do you plan to have a family anytime soon? Okay, we'll think about it. Why? Because they think a woman will divide her time between children and work, or marriage and work, or having a family and work, and the work will get affected. What we should promote is, one, the women are the best multitaskers in the world. मतलब अगर एक होम मेकर की भी हम बात करें एंड सुबह से हम अपना खुद का स्केड्यूल देखें, तो मॉर्निंग 5:30 पे उठ के बच्चों के लिए खाना भी बना रहे हैं, बीच में हम उनको उठा भी रहे हैं, बीच में वी आर ऑल्सो मेकिंग श्योर दे आर गेटिंग रेडी, अलॉन्ग विथ वॉशिंग मशीन चलाया है, अलॉन्ग विथ लंच की तैयारी चल रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स माइट टेक दैट टिफिन और नॉट. उसके बाद the whole set of things, and we are doing multiple things at one time, and the productivity is much higher. So that means if a woman wants to work in an office or wants to work in a place, even if it is not her home, then the woman can multitask and be productive at the same time much more efficiently than a man. So why not, as women entrepreneurs or women, homemakers, we promote other, well-being in a way कि भाई उनको opportunities दो. What you have to do extra is just create a flexible work schedule for them. How difficult is that for a company? वैसे भी company में आजकल from आधा work being online, it is very easy for work schedule to be very flexible. She can work 2 hours throughout the day whenever she has time.
because it is, women are very thankful when they get a company who are actually, very flexible to get the work done. उनको आपको रिजल्ट से मतलब है, आपको प्रोडक्टिविटी से मतलब है, वो मिलेगा ना एज लॉन्ग एज आप अपॉर्चुनिटीज दो. पहली तरीके से ये हम प्रमोट कर सकते हैं. Second way, what I feel is that okay, if you know that there are housewives around, eventually sometime or the other ऐसा time आता है when everybody gets bogged down with these thoughts कि okay, if you look at the world around you, okay, she is working, he is working, I am not working, maybe I cannot get a job, maybe. So why not motivate them to upskill? पढ़ाई फिर से चालू करो. कोई एज नहीं होती है पढ़ाई करने की. I have seen women 55 years of age starting to study undergrad. Lot of women around the world actually start studying new courses after they retire from their job. आप upskill करो. अगर फॉर्मल कॉलेज में नहीं जा सकते, ओके, तो सजेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज करो. ऑनलाइन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एजुकेशनल वीडियोस देखो, बट ऑक्यूपाई some way. And we being to in a society, we being with friends, motivate each one of us to do this. अगर मुझे दिखता है okay, Alia wants to do something but she is not getting that motivation or she's confused, I will go ahead and help her. If I feel I'm confused at some point in time, I'm sure Aisha, Dia, Charlotte, anyone will come and help me to get my thoughts sorted and get me started on something. And third part is lend a shoulder, become a sounding board, which is very, very important. आज के ज़माने में everyone needs a sounding board. Everyone needs a shoulder because हमारे पास stresses हैं. And we don't have anyone जिससे हम बात कर सकते हैं without getting the fear of being judged. Why not be a shoulder to fellow women? Let her cry it out, let her vent it out. उसको गुस्सा है निकालने दो, उसको रोना है रोने दो. Just be there to listen and just tell her, no matter what is it in the world, I am with you, I am standing with you, I will be there with you. And see the difference. वो इतना 5 minutes में मूड चेंज होता है ना, just by knowing कि whatever happened is not the end of the world and I have someone who's backing me up. Being a sounding board is extremely important. बाहर की countries में ये बहुत common है. Why can't we do this to our friends? Why friends? Why can't we do this to other women? Why can't we be the shoulder to them? Because if we are there to support them, their well-being will, be better. And we will also have that feeling of, okay, I've done something good today. Hats off to me. Because that is a part of self-worth. Does that make sense? Yeah, absolutely. Like the saying goes, no, be that queen who straightens every woman's crown. So Correct. need to be like Perfect. मैं that. बोल रही हूँ, आलिया तुम लिखना चालू करो. Inshallah. Yes. So I think these are 3-4 ways जो हम अपने end में, अपने छोटे से end पे कोशिश कर सकते हैं to be there for other, for our friends, to support. अगर हमारे पास employees हैं, let's make our workplace a better, flexible, happy workplace for women. Send them for movies, yeah, बीच में. Just go for बेकार की outing or just फालतू की outing or whatever. Just keep 2 hours a week where everyone can be transparent with each other. Just गप्पे मारने के लिए. Just not working about work, not talking about work, not talking about anything else. Just maybe movies, maybe places to visit on. Discuss your bucket list, once a week, twice a week.
Everyone should have their bucket list. Everyone. Because that bucket list, और वो एक बोर्ड पे होनी चाहिए, because that is what will keep you motivated कि नो यार, ये साल मुझे ये खत्म करना है, ये साल मुझे, वो कुछ भी हो सकता है, वो जस्ट एक बैकपैकिंग ट्रिप थ्रू एनी कंट्री हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया का कोई एक सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बकेट लिस्ट में एब्सोल्युटली कुछ भी हो सकता है, बट कीप अ बकेट लिस्ट, no matter how weird it is, just have a bucket list. It keeps you going on. That's right. Yes. Yes, Bhavana. I have a question for you. Yes. There might not be any predefined concept, I think, but still I wanted to know, like, what is the right concept, of parenting? Yeah. And as a woman, how can we balance it along with umpteen responsibilities? Okay, so parenting, according to me, is not one size fits all. So parenting is never like, okay, इन्होंने ऐसे parenting किया, it worked with them, it will work with me. Yes. No, because Exactly. every Yes. parent is different, every child is different. So I would say whatever the right kind of parenting is, whatever parenting styles you apply, and the child thrives. And when I say thrives का मतलब absolutely ये नहीं है कि only getting a 90 or 100% in marks. No, because again, जैसे women, अभी हमने discuss किया, there are 3 facets to women well-being. ऐसे there are 3-4 facets to children well-being. और वो तीनों चारों facets mainly होते हैं physical, mental, emotional and study related. So when I'm talking about thriving of a child, I'm talking about चारों facets पे काम करने का, क्योंकि हम as parents, हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को हम आइंस्टाइन बना दें 5th 6th में, हमारा बच्चा ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, so हमारा फोकस ज्यादा करके स्टडीज पे रहता है, फिजिकल एस्पेक्ट पे रहता है, लेकिन हम इमोशनल और मेंटल वेलबींग को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर जाते हैं. Neglected, yes. क्योंकि और जबकि मैं बताऊं, पढ़ाई हर बच्चे की हो जाती है, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, वो पढ़ लेता है, वो कॉलेज जाएगा, वो पढ़ लेगा. What matters more is developing life skills in a child. मतलब एक कॉन्फिडेंट बच्चा जिसको आपने इतना अच्छा ग्रूम किया, इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाया है, मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया है कि उसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो दुनिया में कहीं भी जाएगा, कोई भी चीज करेगा, he can be successful at it. Having that confidence and having that confidence कि मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस, अगर ये है, that is the right kind of parenting. क्योंकि एजुकेशन भी ऐसा नहीं है कि it is one size fits all. And parenting is also one size fits all. What works for my one child will not work for my other child, because there are 2 different individuals. Yes. What I can do is, as a parent, make the situations or every day create that kind of atmosphere जहां मेरा बच्चा चारों facets पे काम कर, और एक टाइम के बाद अपने आप काम कर रहा है. It is not about hand holding also. 9th 10th में आके 8th में आके अगर हम बच्चे का टाइम टेबल बना रहे हैं, उसे सुबह उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसका होमवर्क हुआ कि नहीं, उसके सबमिशन हुए कि, that is also not right kind of parenting. Why? Because हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं. और अगर बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बन पा रहा है, तो दैट मीन्स वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड लेट देम अंडरस्टैंड कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद पूरा करना पड़ता है, कोई और नहीं आता है. बिकॉज आगे जाके जब वो कॉलेज जाएगा तब वो खुद ही पढ़ेगा ना, आप तो नहीं पढ़ा सकते, कितने ट्यूशंस लगाओगे, और उसके लिए आप ओवरनाइट नहीं है एक्सपेक्ट कर सकते कि अच्छा 12th तक हमने किया, बच्चा आगे जाके अपने, नो, बिकॉज वी हैव नॉट इनकलकेटेड दैट हैबिट. So right kind of parenting, I think, is the parenting which is covering all 4 facets, not 1, not 2. So working on life skills, working on emotional well-being, working on mental confidence is also important. That is what I think is good parenting. But again, जैसे हम you asked me this के how can we do that with umpteen responsibility? It is all about time management.
and it is all about aping what you say. मतलब या you're doing what you say. That means अगर जो बच्चे होते हैं, आप उनको कितना मर्जी बोल लो सुबह तुम जल्दी उठो, सुबह तुम जल्दी उठो, लेकिन आप खुद जब तक नहीं उठोगे वो नहीं उठे. Exactly. They I don't get a lot follow of what parents you. जो बोलते हैं हम तो बोलते हैं बच्चे रीडिंग करो, लेकिन बच्चा रीडिंग हाँ. नहीं करना. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ही करते नहीं है उनके सामने. आप कभी रिफ्लेक्ट करके देखना, यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स हैबिट्स एंड डिमीनर्स. सो kids will follow what they see you doing, not what you tell them to do. आपको एक बच्चे को रीडिंग हैबिट डालनी है, आपको रीडिंग नहीं पसंद है, कोई बात. Take a book, sit in front of the child. I mean, don't just, sit in front of the child, pretend to read 5 pages, 10 pages, and, show excitement and laughter when you read. Believe me, आप ये 10 दिन करके देखो, 11वें दिन, your child may not come to you with a book, but he or she will certainly start picking a book to see what is so good in this. मम्मी इसमें क्यों, मम्मी ये क्यों कर रही है? This is how you develop habits. So you have to show them before you tell them. This is how you can start, promoting, what was the question? Promoting the well-being, right? Of the So child. how can the woman balance it with obtain responsibilities, so- the kind of parenting? Yes. Time management is very important. Yes. So we have to work on timetables, and believe me, if we get into the habit of working on timetables, children will start working on timetables on their own because they see you doing that. And for a timetable, matlab, again, if you are a homemaker, again, शाम का time free रखो उनके साथ बात करने की. There has to be 1.5 to 2 hours जहां आप बच्चे के साथ बात भी कर रहे हो, and that talk has not to be with studies. That is the time when you will listen to them. उनके जो experiences हैं दिन भर के, उनके जो confusions हैं दिन भर के, because children want to talk it out. And listening to them without judging them. Yes. And subtly telling them that, okay, अगर ऐसा हुआ तो क्या ये इस तरीके से भी हो सकता था? And not shushing them, saying कि no, this was bad. Explain to them why was it bad? क्यों ये नहीं करना चाहिए था? ये नहीं कि मैंने कहा है. No. बच्चे आजकल ऐसे नहीं है जिनको आपने बोल दिया मैंने कहा, I thought so. नहीं. You have to explain it to them subtly कि ये अगर आपने ऐसे किया और आप किसी जगह ये भी कर सकते थे, या हम ऐसे भी इस काम को कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है. But listening to them is very important. Creating that bond between you and the child is very important. जहाँ एक बच्चा should be free to come and tell you everything in the life, be it good, be it bad, be it something he's done. थैंक यू भावना. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही Thank you था so much. कि मुझे पूछना था कि हाउ अ मम्स पॉजिटिव पेरेंटिंग कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स सेल्फ ग्रोथ, उसका ग्रोथ पे कैसा अफेक्ट करेगा. सो विच हैव ऑलरेडी कवर्ड, so I don't really have to ask that. But what is the impact of this influence of good parenting on other mothers? वो कैसे हो सकता है? जैसे अभी आपने ये बात बताई है कि अबाउट द पेरेंटिंग, ये अपने बच्चे के ऊपर कैसे अच्छा दिख रहा है, द ग्रोथ. तो बट हाउ अबाउट द अदर पीपल, वो कैसे दूसरों को हेल्प कर सकता है? ये लाइक आई बीइंग अ गुड पेरेंट, कैन इट सपोर्ट द सोसाइटी, कैन इट बी हेल्पफुल टू अदर कम्युनिटी पीपल एज वेल? ये भी हो सकता है. Yes, but it can help. But it can help to an extent जहाँ पे अगर कोई आपसे चीजें जानना चाहता है and they want to start doing it, it can help. It is certainly a help. Like for example, when my kids were growing and I was not, मैं उनको कभी भी मैंने बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए पुश नहीं किया कि तुमको ये क्लास भी करना है, ये क्लास भी करना है, ये क्लास भी करना है, ये क्लास भी करना है. No, they came to me saying that how can we try this? I said okay, go ahead. We can also look at these things, explore them, and see if you want to do them. Hi baby,
Sorry, yeah, sorry. Supriya? Yeah, Supriya has a Ah, little baby here. distracted WHH member yeah. हमारी. This is Cute. Vyom, guys. Meet Yeah. Vyom. Hi, you. Sorry to interrupt. He was so keen, he's jumping up. So I thought I'll just show him once and get rid of his curiosity once for all. This is what Mama is देखो, doing. you know, he's already an intellectual. उसकी theory वो है देखो. Yeah. Already thinking what is happening. He was so curious to see. Sorry, I didn't mean to interrupt. So But he cute, was like mashallah, jumping up to see mashallah. what is happening. Why you're looking there and not at me. Oh, he's so cute. So cute, mashallah. Sorry, Yeah. sorry. Please continue. I'm Mash- enjoying this discussion. No, I'm at the sorry, correct please. phase of learning the parenting. So, where was I? Just give me 1 minute. Okay, so I was at a place where I was just telling that how can you influence other mothers? So of course, you know, as a parent or as a mother, जो भी आपको बच्चों को लेके problems होती हैं, of course, as friends we discuss with each other, right? अरे मेरे बच्चे ने ये किया, कल उसके साथ ऐसा हुआ, वो स्कूल अच्छा है कि नहीं, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम. Yes, ask for help. If you have a query, ask for help. Be ready to give the answer. Be ready to explore more. अगर मैं सुप्रिया से मान लो पूछती हूँ कि यार वो स्कूल कैसा है और सुप्रिया बोलती है रुक मैं आई विल फाइंड आउट फ्रॉम माय नेटवर्क. दैट इज द काइंड ऑफ हेल्प यू आर गिविंग मी. So positive parenting can influence others in a way where you can help them find solutions to their problem. And if you have sorted that problem out, क्योंकि बच्चों को लेके we are possessive, we are protective. So there are small and big queries जो lifelong चलती रहती है. हर स्टेज पे अपनी set of issues आते हैं पेरेंट्स को. That's right. अभी जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो आई कैन बी समवन हु कैन टेल देम ओके मैंने ये ट्राई किया था, इट वर्कड वेरी वेल, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड सी वेदर इट वर्क्स फॉर यू. नहीं तो अपन कुछ और सोचेंगे. बट आई कैन ओनली डू दैट व्हेन आई एम ऑफ अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. कई अगर मैं ऐसी हूँ ओ मेरे बच्चे ने यहाँ अप्लाई किया है, ये अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे अप्लाई किया था, बट मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगी. एम आई अ पॉजिटिव पर्सन? नो. So if I am a positive person, जो मेरे को information है, if I am able to share with other people, that is a kind of influence or that is the kind of help that I can give other parents as well. Positive का तो मेरे को नहीं पता, but otherwise we have seen the WhatsApp group being flooded with the stress. अगर ये मम्मी को stress है, वो पूरे को सबको भेज देगी WhatsApp के थ्रू. मैंने एग्जाम्स के वक्त देखा ये क्वेश्चन, my child doesn't know this topic. Did the teacher give the give answers to this one? Was it taught in the class? What's the alternative way? Have you Googled this? Which dictionary is it? And Allah, really? And जो normal parents भी हैं जिन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं, instantly they'll panic और वो लोग दूसरे ग्रुप में chain reaction of panic हो जाता है. Yes, and I've seen this because I was in like multiple groups उस वक्त parents के groups में. I had seen one person raise that concern. वो 5 minutes में सारे WhatsApp group में create हो गए. मतलब कितने hundreds of women को वो affect कर गया, बोलो. So yes, positive way में करते तो कितना अच्छा होता. Exactly. और I'll tell you what, exams को stress बनाना बंद करना चाहिए हमको as much. Yes. Because these are just study exams. Life में बहुत practical problems आती हैं. वो बहुत बड़ी होती. Schooling is just a small part of it. I have seen mothers getting panicky over moral science exams in grade 5. I know. Moral science exam में panic कर रही है कि 5 साल के question paper share कर दो. So guys, exams are just a part of schooling until and unless वो secondary है, don't panic at all. और secondary में भी panic करने की जरूरत नहीं है, because panic creates more stress and more stress means क्योंकि एक mother panic करती है या एक mother stress करती है ना, वो stress पूरा का पूरा बच्चे पे जाता है. Yeah. Half of the times when you are upset, your children won't come near you because they don't want to step on the wrong toe.
Even if they want to comfort you, even my daughter says sometimes, I wanted to come and hug you, but you were not in a good mood, so I was a little, hesitant. Because if you stress, the stress goes on to your children. And अगर वो stress children के बारे में है, तो it is all the more stressful for them. उनको ऐसा लगता है, I am disappointing my parents somehow. And that is the biggest fear a child has, disappointing a parent. एक बच्चे को इतना फर्क नहीं पड़ता उसके grades कम आ रहे हैं. He can work hard, but what he's scared of is, अगर मेरे grades कम आए, तो मेरे parents मुझसे disappoint हो जाएंगे. That is what he doesn't want. And that is what creates additional stress in the mind of a child. फिर तो पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही है, तो वो पढ़ाई को लेके स्ट्रेस आपने किया, तो बच्चे की पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही है एट द एंड ऑफ द डे. सही है. एंड और एक भावना, ये तो पेरेंटिंग के ऊपर हमने कवर किया था. एंड सच वंडरफुल इनसाइट्स. लाइक हमेशा तुम्हारे लिए ना वो होते हैं, मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि सुनते रहो, बिकॉज यू आर लाइक ऑन एंड ऑन. वो बोलते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया, तो तुम्हारा दिमाग वो वैसा है, चलती फिरते एनसाइक्लोपीडिया हो तुम, जिसको सारे कुछ इन्फो मालूम है. एंड यस, वो बोलते हैं ना, इन्होंने पहले ही बोला कि व्हाट वाज द टर्म दैट यू सेड, शोल्डर पैड वाज इट? What was साउंडिंग that? बोर्ड या Sounding board. मैं sounding shoulder board. pad पे बैठ गई वहां पे. Yes. नहीं sounding She is या one, shoulder, by the मतलब way. कॉमन लैंग्वेज में उसको गिविंग अ शोल्डर या वो देना बोलते हैं, लेकिन वैसे उसको साउंडिंग बोर्ड बोलते हैं. Sounding board. Agony aunt also you can say, right? Agony aunt. यार एगनी आंट थोड़ा सा वैसा हो जाता है वैसे भी who likes to call themselves aunt, tell me. I don't. Yes. So yes, ये तो है कि साउंडिंग बोर्ड तो तुम्हारे से बेहतर कोई नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स यू आर अ काउंसलर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो तुम सोचती हो दूसरों के बारे में, तुम इंक्वायर करती हो, कुछ यहाँ वहाँ हो गया तो यस, यू आर एक्चुअली प्रीचिंग व्हाट यू आर सेइंग. जो भी तुम करती हो, तुम एक्चुअली रियल लाइफ में करती हो, वो फॉलो भी करती हो उसको पूरी तरीके से. सो दैट इज समथिंग वेरी इंप्रेसिव अबाउट यू. I just don't want to really take much of your time, but one last question that I want to ask, and after that, of course, अगर हमारे वाले के हुई हैं जिनको question है, they can definitely ask you. Like as a women, अभी हम इतना वेलबींग के बारे में बात करें, पेरेंटिंग तो हो ही गया. लाइक जब हमारी बारी में आता है, जब हम बोलते हैं कंटेनमेंट, हैप्पीनेस वहाँ आता है, तो आता है और एक चीज सेल्फ केयर के बारे में. हाउ इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन? वो It कैसे is important? very important, very important. Feeling good about yourself is very important. वो सेल्फ केयर का मतलब, ओके, जिम जाना भी हो सकता है, स्विमिंग भी हो सकता है, गेटिंग फॉर फेशियल्स हो सकता है, और कुछ नहीं तो 2 दिन में एक बार फेस पैक लगा के बैठना भी हो सकता है. Whatever gives you happiness and gives you, positive frame of mind. वो बैठ के नेटफ्लिक्स का एक सीरीज देखना भी हो सकता है. Anything what you feel like doing, you should go ahead and do it, because after you've done that, you kind of feel happy. Anything that boosts your mood, because being in a happy mood, being in a content frame of mind actually helps your children be more, you become more approachable, kids are happy around you, family is happy around you, the entire thing is. But self care is very important for us, because वो हमको एक अच्छे मूड, coming from a beauty parlor, suddenly अपना एक वो peppy step हो जाता है. Okay, I look good now. So isn't it a confidence boost? हम ब्यूटी पार्लर से आते हैं. Tell me. Of course, eyebrow निकालने के बाद ही हो जाता है. Exactly. So that means anything which improves your confidence, वो कुछ भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो I am exhausted enough, 3 घंटे की sleep can do that. For me, having sessions does that. Self care is, for me, is that. So it is all about what boosts up your confidence, what makes you more happy and chirpy. That is self care. Of course, I would say कि okay, self care का एक बहुत बड़ा part है exercise. बहुत बड़ा part है, क्योंकि it helps you, on a physical level and mental level too. So getting into any form of exercise, having a beauty routine, although I know it is difficult, रात होते होते, you don't feel like
half of the time washing your face, cleaning your face, applying cream and all that, but still having a beauty routine or having any kind of routine which helps you, boost up yourself is very important. Sleeping on time. So self-care is important to boost up our mood, our happiness, and in turn, अपना पूरा family happy रहता है. And also it gives children also this thing about, that how why self-care is important. और सेल्फ केयर में कुछ भी हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है कि सेल्फ केयर में ये करना है तभी वो सेल्फ केयर होगा. इट इज ऑल अबाउट सेल्फ एंड केयर. व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर माय केयर, इट कैन बी टाइमली डॉक्टर विजिट्स, जिसको हम ज्यादातर होम मेकर्स इग्नोर करते हैं. हाँ यार, ये छोटी सी चीज है, 10 दिन बाद चले जाएंगे, 15 दिन बाद चले जाएंगे, अरे अभी गेस्ट घर में आने वाले हैं, फिर पीटीएम है, फिर ये है, फिर वो है. And we keep ignoring our small issues, medical issues. That is also a part of self-care कि आप doctor visits timely करो, make it a point to take medicines on time. अगर आपकी कोई prescribed है, check up your health levels. Diabetes है किसी को तो keep checking your sugar levels. Everything comes in self-care. So self-care is very, very important. Any which ways. अगर if you are into 100 meetings in a day, make sure कि हर मीटिंग के बाद 10 मिनट आंख बंद करके बैठ सकते हो. Keep drinking, juices and water in between the meetings. Keep yourself full, food wise also. Don't starve yourself because you're running around doing meetings. That is all self-care. Anything, everyone needs self-care. Working women, non-working women, mothers, old bachon ki mothers, young bachon ki mothers, babies ki moms, everyone needs self. And that is something which you should prioritize, no matter what it is. क्योंकि तुम खुश तो family खुश, family खुश तो surrounding खुश, तुम खुश तो job is getting done better. And self-care is again all about boosting your happiness. That's amazing. Thank you, Bhavna. Thank you so much. मेरे लिए तो ना सबसे पहले सेल्फ केयर क्या होता है, उठ के रेडी हो जाओ, बाकी का दुनिया बाहर में गया वहां पे. इसीलिए तुम सारा दिन खुश रहती हो. जाके काजल लगाओ, अपना लिपस्टिक लगाओ, बाकी का सब देख लेंगे बाद में. Anything in self-care. No, whatever boosts your happiness. That is self-care. वो मेरे लिए टोन सेट करता है पूरे दिन के लिए, वरना मैं वो जो अम्मी वाले नाइटी पहन के फिरती हूँ ना घर में, तो मेरे को खुद ही वाइब नहीं आता खुद का. सो आई नो, जैसे तुमने बोला अलग अलग वेज है, बट दैट इज वन थिंग व्हिच आई डू एंड आई टेल माय फैमिली मेंबर्स कि तुम लोग भी करो. जब भी देखोगे सब लोग वो आंटी वाले नाइटी पहन के रहते हो, व्हिच आई आल्सो वेयर. आई हैव टू साइज, वन इज दिस, द अदर वन इज दैट दूसरा वाला कॉटन नाइटी नहीं होते, आधे त्रिफ हो जाते हैं वो वाले टाइप्स के. टू थिंग्स, पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाता है मेरा. तो यस, तो मेरे लिए वो है. एंड आई एम श्योर यू गर्ल्स माइट बी हैविंग योर ओन, बट आई थिंक सेल्फ केयर मैं सबसे ज्यादा रखती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट भी. जितनी मैं अपनी खुद की इज्जत करूंगी ना, मैं शायद दूसरों की भी ज्यादा कर सकती हूँ. तो आई बिलीव इन दैट वन थिंग. ये जो मेरा मोटो है मेरे लाइफ का. सो thank you for getting this point also. थैंक यू भावना, हमेशा इतना तुम करती हो ना. तो मेरे तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, WHH के एडमिन्स के भी हो गए. अगर किसी और का बच्चा है तो प्लीज, या फिर किसी को तारीफ करनी है अपनी भावना की, प्लीज गो अहेड एंड डू. सुप्रिया इज हियर, सुप्रिया गुप्ता, यस सुप्रिया गुप्ता. एंड सुप्रिया अपनी चौहान भी है, दोनों है. यस भावना एक्सेलेंट, बट मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट, व्हेन आई स्टार्टेड दिस मीटिंग, आपने बोला कि वुमेन्स हैप्पी क्यों नहीं रहती हैं इन वन पॉइंट, बिकॉज अभी क्या है, अभी सिचुएशन ऐसी कि वी आर इन द 2 पार्ट. कुछ पेरेंट्स, कुछ मदर्स हैं जो जॉब नहीं करती हैं, और कुछ मदर्स हैं जो जॉब करती हैं. दे आर एजुकेट ऑल्सो, जस्ट लाइक मी. बट क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको, आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो घर में एज अ हाउस वाइफ फॉर चिल्ड्रन एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिलता है, यू नॉट अर्निंग समथिंग, वट एवर, यू नॉट कि मेरे को ही सब कुछ करना है, आई एम अ मैन ऑफ दिस हाउस, और वट एवर, इफ यू वॉन्ट टू गो आउट इन द हॉलीडे और वट एवर, यू गो इन द माइका, सब कुछ तो आई अरेंज फॉर यू, यू नॉट डू एनीथिंग. तो वो जो एक
वुमेन्स के लिए डिप्रेशन वाली बात हो जाती है कि अगर सपोज एज अ मैं बाहर जाऊं तो जो मैंने बच्चों को ज्ञान और जो उनको सेफ्टी और जो पूरा केयर दिया है वो दूसरा पर्सन नहीं दे सकता, चाहे मैं नहीं दे कितनी मेड्स सकता, रख लूं. एब्सोल्युटली. So yeah, this one is not understand men, even सास, whatever is near surrounding, if they not understand. तो अभी क्या है, हम लोगों की सिचुएशन जैसे हम एज जो है 40-50 के बीच में, so हम लोगों की मदर्स इतना जॉब नहीं करती थी. वी आर एजुकेट बट वी आर नॉट जॉब की, हाँ Yes. हमें जॉब करनी है. सो वो चीज अब इस एज में आकर बहुत बीच में आ गया है कि अब मनी बहुत जरूरी हो गई फॉर किड्स एजुकेशन, उनकी डिमांड्स, एवरीथिंग. सो ये भी एक बहुत बड़ा एक वो है. सेकंड माई इज दिस कि क्या हमें जो हमारी मदर ने सिखाया है, शी इज टीचिंग अबाउट 20 years बैक. सपोज सपोज जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जांपल, मेरी भाभी है, उनकी मदर मैरिज तक उनके हेयर खुद वॉश करती थी क्योंकि वो लंबे थे, घने थे. एंड शी इज कैरिंग स्टिल 15 years डॉटर्स, वो उसके बाद अभी भी धोती है. तो आई जस्ट टीच कि तुम ऐसा क्यों करती है, उसको यूनिवर्सिटी जाना है, उसको करेक्ट आगे है. पढ़ने जाना है. बट समटाइम्स आई स्टॉप माई सेल्फ बिकॉज जो वो लर्न कर कर आई है वो आगे अपनी डॉटर को वो फॉरवर्ड कर रही है. इवन आई आस्क सो मेनी टाइम्स कि मैंने भी अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा है. एंड इन बिटवीन आई जस्ट मिक्स एंड मैच बिकॉज वो उस टाइम पर काम होता था, वो अब नहीं होता है. एग्जैक्टली, सो करेक्ट है. दैट्स ऑल्सो, जैसे हमको पैम्परिंग मिली, अब हम बच्चों को पैम्परिंग देंगे तो हमारे बच्चे का कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, हाउ डू दे नहीं कर मैनेज इट, पाएंगे, डजंट. दे विल नॉट बी एबल टू हाँ, मैनेज. जैसे बच्चों को बस आजकल बच्चे इंडिया में बस में बैठते ही नहीं है, ट्रेन में बैठते ही नहीं, एवरीबडी मतलब ड्राइव करके ही हर कोई जाता है या फिर फ्लाइट में जाता है. सो अगर सपोज उन्हें यूनिवर्सिटी से वापस आना है या सपोज किसी और कंट्री में जाना है, वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना है, हाउ टू मतलब कैसे लोग आपको टच करते हैं या जो भी प्रॉब्लम है वो उन लोग को नहीं पता. वो लग्जरी होकर अपनी चप्पल से लेकर अपनी सब कुछ गाड़ी में रख रहे हैं और वहीं पर उतार रहे हैं. ही डजंट नो कि 20 kg में हमें कैसे अपना पूरा मैनेज करना है लगेज, कि हमें ये जरूरत भी है, नहीं करेक्ट है. जरूरत भी है. सो वो सब चीजें मेरे ख्याल से मतलब हमको जो एज अ पेरेंट हमें वही चीज फॉरवर्ड करनी चाहिए जो उनके लिए यूजफुल हो, वो नहीं कि जो And हमने लर्न किया जो सारा हम उसको कॉपी पेस्ट कर दें. एक्चुअली मेरे हिसाब से भी हमको बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप जो कुछ सीख रहे हो उसको राइट, आप सिचुएशनली हैंडल करो. डोंट राइट. गो वर्बैटिम, क्योंकि वो रेलेवेंट था 20 years बैक. अभी अगर हम सेम चीज फॉलो करेंगे, सिचुएशन वो नहीं है, तो दे नहीं नीड टू है. अंडरस्टैंड कि कहाँ किस चीज को कितना फ्लेक्सिबली यूज करना है. राइट. सिचुएशन. सो ये एंड बहुत इसीलिए मैंने भी बोला था हैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए. वी आवर बेसिक our basic duty is to create responsible adults. हम बच्चों को बड़ा करके अडल्ट्स बना रहे हैं और हमें उन अडल्ट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना है. उसके लिए हम ग्रेजुअली सिखाएंगे. लेट देम अंडरस्टैंड फॉलिंग इज important. Let them also understand what is the importance of failure. Failure is also a part of life. What is more important is आप गिर के कितनी जल्दी और कितने अच्छे से उठते हो. ये नहीं सिखाना कि नो यू कैन नॉट फेल, यू कैन नॉट फॉल, आपको सिर्फ सक्सेसफुल होना है. ये पॉसिबल नहीं है लाइफ में. आप पढ़ाई में बेशक सक्सेसफुल हो जाओ, लाइफ में हर एक के फेलियर्स आते हैं और उस फेलियर से कैसे आप उठ सकते हो. और जो आपने पहली बात बोली ना कि एक टाइम आता है जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे क्योंकि आपने कभी जॉब नहीं की. वो टाइम आता है, ऑफ कोर्स आता है. एंड वही टाइम के लिए मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से अगर आपके पास ऐसा टाइम है और घर वालों से आपको प्रेशर पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगी ट्राई एंड फाइंड आउट वेज. क्योंकि आज की डेट में ना, अनलाइक वो जब हम 25 साल पहले हमारी शादियां हुई थी, आई थिंक तुम और मैं एक ही एज ग्रुप के हैं सुप्रिया. यस, उस टाइम में वो बाउंडेशन नहीं थी काम करने और उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी. आज बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ऑनलाइन है, घर बैठे हैं, 3660 चीजें आप कर सकते हो. लाइक सुप्रिया का तो मतलब जो डॉक्टर सुप्रिया ने किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ, being a dentist, she learned that casting skill and now she's turned it into something else, which is pretty amazing.
तो यू कैन ऑल्सो, लोग अगर चाहे तो हम कोशिश छोटे तौर पे अपनी कर सकते हैं। और मैं हर लेडी को बोलूंगी, हर फ्रेंड को बोलती हूँ कि अपस्किल योर सेल्फ, पढ़ाई करो, चाहे फ्री कोर्सेज करो, चाहे कुछ भी करो, बट टाइम निकालो दिन में कि आप पढ़ सको। अपस्किल करो अपने आप को, जितने सर्टिफिकेशंस ले सकते हो लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके किसी भी स्टेज पे काम आ सकते। राइट। और मेंटल पीस के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उस पंचायती से निकल के कहीं ढंग की जगह फोकस की जाए। Yeah, we are blessed कि we are outside the India, because India में आप घर के अंदर तो डिप्रेस होते हो, घर के बाहर इक्वली बाहर भी इतना ही होते आप हो, लोगों को करेक्ट पुल करेक्ट पुल करेक्ट। पुल करते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि वी आर आउटसाइड, और हम एक कान से सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, वट एवर दे फॉरवर्ड, माई मदर्स, माई जो बड़े हैं, आई वट एवर आई हैंडल माई सेल्फ, मुझे पता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। एग्जैक्टली। सो एवरी मदर, इन सब जो जितने छोटे छोटे हैं, सो आप लोगों ने अपने मदर जो सीखा है दैट्स अ गुड, बट जो गुड सीखा है उसको फॉरवर्ड करो। बाकी अपना जो सराउंडिंग आप लोगों का सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से अपनी उसको हैंडल करके ट्विस्ट एंड ट्विस्ट फ्लेक्सिबल भी कर रखो, सकते हो, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल रखो। रखो। हाँ, सही बात। राइट। वेरी वेरी वेल सेड सुप्रिया, वेरी वेल सेड। Yeah, Supriya wanted to talk, Dr. Supriya. I Hi, I'm so Supriya. happy. I'm so happy to have this session from Bhavana per se, who is not only a good parent herself and has raised her kid to at level, मतलब teenager, newborn stage सारी cross कर चुकी हैं, but she also meets a lot of kids and can point out the parenting failures. हम अपनी दुनिया में रहे, हम अपने cousins को देखे हैं, हमने अपनी family देखी है, हम उतने ही experience रखते हैं. But Bhavna has gone out of her way and she has actually peeped into all kinds of parents. And thanks to Dubai, we have such multicultural parents here. And because of her profession, she meets so many parents that she can actually pinpoint and pick up the parenting mistakes from each and then, guide us accordingly. So what you have chosen, Aisha, commendable to it. Like there can be nobody else for this talk better than Aisha, better than Bhavna. So I'm really glad that Bhavna is speaking to us today. I missed out at starting of the session. I'll catch up in the YouTube for sure. And no questions here because I'm in my own world. But नहीं अभी, and thank you so much Supriya, yeah, for this. Clouded. But just here to praise Bhavna, and I really, some points which so very well, be self-care or something, you need just frequent reminder from someone to implement on it. We all know most of the points, but when it comes to implementing on our health and ourselves, we kind of forget that we could have done that to feel better. So thank you for pinpointing a lot of those points which I at this stage definitely needed an attention. Thank you so much, I was Supriya. looking for Michelle Obama's interview. Yes. You would want to, it's a nice interview, Michelle Obama's and Oprah's. It's there on Netflix. And she also said that nowadays everybody's giving parenting advice. The teenagers come up with parenting advice that this is wrong with the parents these days. This is how the parent should be. Are you a parent? Have you become a parent? So she said, I want parenting advice from my mother, from my grandmother, from the people who have actually raised the kids. Done the Don't parenting, stand there and give me a parenting advice when you don't know what a teenage is, but you're standing here becoming a perfect newborn mother and saying, this is how if you raise a newborn, they become better teenager. Have you raised your newborn to a teenager? No, so you are not eligible for parenting talk. So, that's what I was very happy about. We have a perfect parent to look up to, and I met your daughter, and I'm equally impressed by your parenting style, and I would not look further. If I have any parenting doubt, I'll definitely come down to you. So much for this confidence, Congratulations Supriya, for being the best parent that we can look up to, and beautiful session. Thank you. Thank you Supriya, thank you. Anybody else, girls? कोई है जिसको बात करनी है भावना से? Please unmute and talk. And उसके बाद we can wind up. Is everyone okay? किसी को और कोई doubts है? You want to ask about parenting, well-being के बारे में? Yeah, Hi Jia. Bhavna, how are you? I Hi don't have Aisha, any doubts Assalamualaikum. because the session was so very well organized. The thoughts were put in so clearly that at a point you could feel that you know everything that Bhavna is talking, and you can relate somehow in your everyday life that you are going through when you are trying all kind of tips and the information that you search on Google or you read books on parenting. But
what I like the most that Bhavna said was, one size does not, that's not one size that fits all. It's all. They all have different kids, they all have different tantrums, they all have weaknesses, strengths. So it is merely impossible that anybody can give you a full-fledged parenting tip and you can go ahead with it. So that point I really loved that Bhavna said, and you have to be flexible enough knowing what is correct for your child. So, And smart enough. yes, you have to be really flexible and understand that what is the best for your child, what is good for the, because it's so fast changing world. It's definitely not the same world that we were into. हमारे childhood में ये हुआ था और हमारे Correct. बच्चे क्यों नहीं करे. I think that comparison, when you come, you lose the bond with your child because the child is so frustrated and he says, आप 20 years पहले की बात क्यों कर रहे हो? World is not the same. The world has completely changed. You talk about now what is correct for this kind of world. So I think that flexibility, even I do that at times. मेरे बचपन में मुझे तो ये नहीं मिला था, आपको तो 12 साल में सब कुछ मिल गया है. Even I do that still. But I try to still make it a point that जितना हो सके मैं ना करूं, and I try to be flexible enough. But I really love the way you have put in your thoughts. Commendable. So thank you Thank so you much so for much. having this session, and thank you, Aisha, for getting Bhavna here, a very good friend. But Yeah. today I am listening completely on a different note. Kudos to Thank my you, team thank also. you. My girls, they wanted Bhavna long back. And वो टॉपिक तब अगर होता ना सेशन, तो ये एग्जाम्स के ऊपर होता. एग्जाम हाँ, प्रेशर एंड एग्जाम के मैं ऊपर ये था. बात किया था. यस. फिर मेरी आलिया उनको ज्यादा था कि उस एग्जाम्स आ रहे हैं आयशा, उस वक्त करते हैं वो टॉपिक. फिर वो उस वक्त नहीं हो पाया, एंड देन वी केम अप विद दिस, तो रेलेवेंट टू नहीं, आवर बट आई गर्ल्स. थिंक पता है एग्जाम प्रेप बहुत ऑल डिस्कस्ड भी है, बहुत चीजें भी है. बट विमेन वेलबींग एंड पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो कितना भी डिस्कस कर लो, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें आती हैं जो हम बात कर सकते हैं. यस, नम्रता. नम्रता, हाँ. हाय भावना, थैंक यू Right. सो मच. मुझे तो सबसे पहले इतना अच्छा आपका पॉइंट लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हेल्प समवन, कि कोई तुम्हें खुल के रोए, तुमसे बात करे. आज की दुनिया में कोई ऐसा मिल जाए तो मतलब ऐसा है कि भगवान को प्रणाम करना, उस बंदे को प्रणाम करना कि भाई थैंक गॉड कि कोई है हमारे लिए अपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि यूजुअली हम डीलिंग विद वन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 9 year old. आप थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नम्रता. एक्चुअली क्लास में हूँ ना मैं, स्कूल में, that's why. ओके. इसलिए तो अभी आ रही है आवाज? इज इट ऑडिबल? हाँ, बोलिए. प्रॉब्लम ये है कि दैट टीनेज, मतलब मैं क्या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ. मतलब नॉर्मली माइंडसेट ये रहता है कि बच्चे को प्यार से हैंडल करना है, बट वो इतना लेविश लाइफ में जी रहा है, पंजाबी फैमिली का है, 8-8 नौकर है घर में, तो उसका बिहेवियर जैसे 9 year old में छुप छुप के सिगरेट पी रहा है, गाड़ी में कार में पेपर जला दे रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके पेरेंट्स तो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आप पढ़ा रही है तो ऐसे कुछ पेरेंटिंग का या कुछ ऐसे गाइडेंस बताएं. तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ, या तो मैं आपसे काउंसिल कराऊँ उसका, या नहीं, ऐसे मैं भी आपको हैंडल एक हो. बात बताती हूँ. उसकी काउंसलिंग से पहले ज्यादा जरूरी है उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग. पेरेंट्स की, बिल्कुल. क्योंकि अभी एक्चुअली उसकी अगर वो मदर भी लैविश लाइफस्टाइल में जी रहा है और वो जी ये रहा है. सिगरेट भी हाँ पी रहा है, तो उसको ये चीज हाँ, पेरेंट्स और घर से ही मिली है. 9 साल का करेक्ट. बच्चा, 7 साल तक बच्चा सिर्फ एब्जॉर्ब करता है. 8 साल एब्जॉर्ब का करता बच्चा सिर्फ है, एब्जॉर्ब करता है और और वो उसके बाद वो पेरेंट्स नहीं वही मान करता रहे है. हैं. पेरेंट्स नहीं मानेंगे. पेरेंट्स पंजाबी पेरेंट्स है, मुझे अच्छे से पता, वो नहीं मानेंगे. नहीं मानेंगे. और उनको वो क्या एक्चुअली सारा टाइम एक तो मेड के साथ, सर्वेंट के साथ ही है, वो सर्वेंट से ही सीखा है, तो वो नेपाली वही सीख सर्वेंट रहा है. है, तो उसमें बच्चे की गलती कहाँ से हुई? जब और तक वो उस फिर मान भी नहीं रहे ना, उनको लग रहा है ये कैसे सीख रहा है मैडम, ये और एकदम सीबीएसई से आईबी करिकुलम में आ गया. आप उन पेरेंट्स का ना, आप आपको ऐसा लगता है तो आप उन पेरेंट्स को बोल देना, आप ये नंबर है, इनसे बात कर लो. हाँ मैं अपने आप बोल ठीक है, दूंगी. ठीक है. क्योंकि उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि कोई हो ऐसा, तो आपको मेरे को आप ही का ही एकदम से ध्यान आया कि क्योंकि एक पेरेंट्स को बहुत इजीली लगता है, अरे मेरा बच्चा ये गलत कर रहा है, मैं उसकी काउंसलिंग करा. उसकी काउंसलिंग से पहले आप तो अपना बिहेवियर रिफ्लेक्ट करो.
नहीं वो पेरेंट्स बोल रहे हैं मैडम हमें से लेला नहीं जस्ट अ मिनट वो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम भी उसको सारा टाइम मुझसे कोई कंप्लेन करता है तो बच्चा कैसे मार मार के सुन सुन के डीट हो जाता है मतलब अरे जो करना है कर लो मेरे को पता है आप डांटोगे ही सही मेरे को मारोगे ही सही अब कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब ऐसा नेचर हो गया है उसका तो हो ही एक्सेप्ट जाएगा कैसे ना, करें? क्योंकि उसको तो इतनी समझ ही नहीं है। वो 9 साल का है, 9 साल का बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है अपना डेटा एनालाइज करना। तो वो क्या करेगा? और अगर उसने ऑलरेडी इतना मार खाई है, डांट खाई है, उससे ज्यादा वो क्या करेगा? क्योंकि ही डजंट नो एनी बेटर। उसने जो आसपास देखा है उसके लिए देखिए, एज अ पेरेंट अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं, अगर हम वेप कर रहे हैं, बच्चा हमारे को रोल मॉडल मानता है। अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो बच्चे के लिए वो एक्सेप्टेबल है। वही मैंने पेरेंट्स को ही बोला कि आप लोग रात रात को पार्टीज कर रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं बियर पी रहे हैं तो वो भी यही बोल रहा है कि नहीं मैडम बड़े होके पीऊंगा मेरे को जल्दी बड़ा होना है हाँ, मुझे क्योंकि छोटा उसके नहीं पास है वो घर में वही देख रहा है वो। फिर पेरेंट्स को कैसे समझाएं मतलब वो कैसे करें वो तो बोलेंगे मैडम हम तो समझ रहे हैं हमारे तो पार्टी तो होंगी ऐसा थोड़ी होगा बच्चे को हम रखें अंदर वो भी ज्वाइन करेगा ही सही देखेगा ही सही कल्चर कैसा है फिर क्या तो जवाब फिर दें तो फिर कल्चर देखेगा तो वही कल्चर तो सीख रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ये भी करते रहे लेकिन हमारा रिजल्ट, अरे हम आलू उगाएंगे तो धनिया थोड़ी उगेगा, आलू ही उगेगा ना। आलू ही उगेगा सही बात है सही तो बात है अगर हम पार्टीज भी करते रहेंगे, हम दारू भी पीते रहेंगे, हम सिगरेट भी पीते रहेंगे, हम लैविश लाइफस्टाइल भी जिएंगे, तो बच्चा थोड़ी कुछ और करेगा। उसने कुछ और देखा है क्या? तो इस बीच में मैं कैसे रोल मॉडल बनूं मतलब तू पढ़ाने जा रही हूँ मैं जैसे उनको प्यार से होमवर्क जैसे करा रहे हैं पर इसे बार बार ना पुश करना पड़ रहा है जैसे ये क्योंकि क्यों नहीं करा बेटा देखिए, आपने आपकी एक लिमिटेशन है, आप कितना कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होगी, तब तक आप अपनी तरफ से सिर्फ उसको ये एहसास दिला सकती हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं आपकी साइड हूँ। और क्योंकि अगर हम उस बच्चे को गलतियां ही दिखाते रहेंगे तो उसकी नजर में वो गलती नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वो कर रहे हैं, वो भी यही उसके बोलता है आसपास के सारे एडल्ट्स वो कर रहे हैं, इसलिए उसकी नजर में वो गलत नहीं है। बच्चे को राइट एंड रॉन्ग की जो मोरालिटी है वो आपने आसपास देख के समझ में आती है। एक बच्चे को अगर आप चोरों की नगरी में डालोगे तो उसके लिए वही रियलिटी है और वही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसने वही लाइफ देखी है। और वो उसमें बच्चा कहाँ गलत है, क्योंकि सिचुएशंस वैसी हैं। तो जब तक उसकी सराउंडिंग थोड़ी सी चेंज नहीं होगी तब तक उसको बेसिक अंदर से वो चीज बदलेगी नहीं। उस बच्चे के लिए रियलिटी वही है, एक्सेप्टेबल वही है। सही ठीक है तो फिर भी मैं आपको एज ए पेरेंटिंग के मतलब उसके पेरेंट्स से कनेक्ट कराऊंगी जैसे बिल्कुल फिर थोड़ा बहुत भी चेंज है मुझे तो एक्चुअली वैसे लगता है कि किसी के थ्रू या किसी का काम हो जाए एटलीस्ट तो वो बेटर है और थैंक बिल्कुल गॉड आप मिले टू बिल्कुल। आयशा एंड यू कनेक्टेड थैंक यू, थैंक यू सो मच बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। भावना एक कमेंट आया है यहाँ पे हाँ, कि क्या बोला है इन्होंने इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट उसके ऊपर दे वांटेड टू हियर दे आर इन द हॉस्पिटल सो कैनॉट अनम्यूट एंड टॉक इट सिम्स सो शी वांट्स टू नो अबाउट दिस टाइम मैनेजमेंट फॉर herself and for her kids. तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये है, मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर एवरीडे वर्क एंड वर्किंग ऑन अ टाइम टेबल विथ योर चाइल्ड। मतलब एक टाइम टेबल आप बनाओ अपने लिए, उस पे 20-25 दिन काम करो, एंड एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग विद अ टाइम टेबल, जस्ट मेक श्योर योर चाइल्ड नोज इट। बिकॉज एक टाइम टेबल बनाने का फायदा तभी है जब आप 5 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 500 दिन उस पर टिको। ये नहीं है कि आज हमने टाइम टेबल बनाया 3 दिन बाद वो चला गया। नो, यू हैव टू बी वेरी रिजिड विथ योर टाइम टेबल। एंड यही चीज बच्चों को भी सिखानी पड़ती है। व्हाई? बिकॉज व्हेन दे ग्रो अप एंड गो टू यूनिवर्सिटीज और कम इन सेकेंडरी क्लासेस, दे नीड टू नो हाउ टू वर्क ऑन डेडलाइंस।
टीचर्स कितनी बार रिमाइंड नहीं, आधे से ज्यादा टीचर्स रिमाइंड नहीं कराएंगे। एंड वो बच्चा भी तब सीखता है जब पेरेंट्स टाइम टेबल से काम कर, ओके बच्चा 4 बजे आया, वो he needs to know कि by 5 o'clock he needs to either sit for studying or do the reading or for classes. Then he needs to find 1 hour where he can go play and relax. Then he needs to do something. So टाइम टेबल पे काम करना हर एक के लिए जरूरी है। आयशा, अगर हम लोग सुबह सुबह जल्दी नहीं उठे, हमारा काम हो जाएगा क्या पूरा दिन? टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है भाई। आई हैव वन Exactly. मैनुअल So वाला। time management is only possible when you start making a timetable, और कोई भी ऐसा बोर्ड घर में रखो जहां आप स्टिकी नोट्स लगा सको दिन भर के इंपॉर्टेंट काम के, स्पेशली डेडलाइंस के। स्टिकी नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेडलाइन। अगर 3 दिन बाद मुझे कुछ सबमिट करना है, मैं हर बार अपने फोन की कैलेंडर में नहीं जा सकती, बट एक बोर्ड अपने वर्क प्लेस पे या फ्रिज पे या ऐसी जगह जहां दिन भर में मेरी 10 बार नजर पड़ती है, आई कैन राइट ऑन अ स्टिकी नोट एंड स्टिक इट। Deadlines will work with pink color. Appointments can work with yellow color. This is how you can do time management. बच्चे हैं लैपटॉप पे काम करते हैं, मेक श्योर हर बच्चे को स्टिकी नोट यूज करना है और वो अपने लैपटॉप के ऊपर स्पीकर वाले एरिया में या ऊपर वाले एरिया में चिपकाना चालू करे। जब वो घर आता है बच्चा, तो वो अगर 6 स्टिकी नोट्स देख रहा है तो उसको पता है आज मेरे को होमवर्क किसमें मिला है, आज मेरा असाइनमेंट कौन सा है, डेडलाइन मेरी कब है प्रोजेक्ट। That sticky note really works very well. And having a planner and a timetable works very well. Planner बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। Every child should know how to work with a planner from grade 7. राइट। Planner and sticky notes दो ऐसी चीज है जो हर बच्चे को सिखाओ और हर बच्चे को यूज करना है। नहीं तो बिलीव मी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अटेंडेंस भी नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर्स एंड टीचर, यू हैव पेड द फीस, तुम आए तो तुम्हारा भला, तुम नहीं आए तो हमारा भला। Less people to teach. So kid has to be responsible enough to work on deadlines with their assignments, projects and submission and studies too. और कोई एक्सक्यूज नहीं होता रात को मैं 3 बजे तक पढ़ रहा था तो सुबह 8 बजे उठ नहीं पाया। नो। So this is how you can work on time management. Amazing. और ये मैं भी यूज करती हूँ टाइम टेबल जब से मैं ग्रेड 10 से थी तब से। एंड देन आई हैव जरूरी टॉट है माय भाई। किड्स, लेकिन माय सन ही स्टिल लाइक उसको ना एक दिन कर देगा, यार मूड में है 8 तो। साल का है, उसको बच्चा रहने दो, 2 साल मूड में आया बाद तो मुझे पता। उसने खुद का टाइम टेबल बनाया, उसमें फ्री टाइम 4 घंटे का था, स्टडी टाइम आधे घंटे का था। बोली कौन बनाया तेरे को? यू टोल्ड मी टू मेक माय ओन मम्मा, आई मेड इट, दिस इज हाउ आई एम फाइंडिंग इट फ्लेक्सिबल। करेक्ट, यू डिड नॉट पुट स्पेसिफिक्स। मैं बोली हाँ ऐसा कर, हो जाएगा, तू दोपहर में सभी जगह तो टॉप करेंगा कैलेंडर मेकिंग में। वो ही स्मार्ट इनफ टू पिक ऑन लूप होल्स ना, आई थिंक वो अच्छा लॉयर बनेगा। Oh yeah, you know him better. He is very like smart with his answers and pick up lines उसके मस्त That is होते हैं what I'm वैसे। saying, no, वो लूप होल्स पकड़ता है ना, वो लॉयर बनेगा। अच्छा। Hopefully inshallah देखते हैं। Charlotte is here, wants to say something, Charlotte? Oh, yeah. And I just wanted to say that, Bhavana, I don't think you should ever be worried about giving a talk. For all the fact that you said, I don't know if it'll get me feel nervous. You are great. And Supriya, I've seen that the conversation between Oprah Winfrey and Michelle Obama, and I think your point was excellent. It was on point to say that, Bhavana, I've seen you as a parent. I've seen where your children are at. And when someone has gone through all those stages and is saying it, you don't need to worry about the delivery because the sentiment is on point. The best thing for me, the best takeaway is when somebody who's a curriculum advisor, a very well-known and respected curriculum advisor as you, and Thank still you. says, school is a small part of your life skills, mental well-being is and you have bigger challenges in life. I just feel that the world is more of a moving in the right direction. So thanks for that. Yeah. Thank you so much. Coming from you, it really, peps me up. Yeah, we're going to hear She from is her another soon. life skill. Charlotte is a life skill expert for children. मैं इतने सारे बच्चे भेजती रहती हूँ शार्लेट के पास। Anytime. Thank you so much for the recommendation. Thank you. Sana is here. Sana wanted to say Yes. something. Hello, Bhavna. हाय सना, कहाँ हो एक यार, तुम दिखती response- क्यों नहीं हो तुम?
मैं MIA रहती हूँ ज्यादातर but it's okay. The session, I listened to the whole session and it was अरे यार, amazing. It was so insightful for parents like me who have like growing kids to understand how they go, and just a perspective from like a big sister, that this is what they're going through, this is how you have to manage them. It was so insightful. I didn't move for a second, you won't believe it. thank you, Sana. Thank you so much. Thank You've you. always been a source of inspiration for all of us, I think, Of and course. especially for me. I always come to you. Ye nahi hua, wo nahi hua. Can you help me with this? Can you help me with that? हाँ यार, Specifically for my kids, and it's very, very insightful. Thank you so much, and I'm so glad, Aisha, you held this session, and I'm so glad I attended it. I am We so missed happy I you. attended it. अरे मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा तुमको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, but I'm so No, glad no. you are here and give. No, So because I glad for have the a 7-year appreciation. old and a 5-year old. So, I'm going through the phase where my older one is getting a little older and understanding the world. And I need to understand from a third person's perspective how it is. And who else than Bhavna Sood to guide us, who's gone through everything and raised such good kids. Mashallah. Just not academically, even the way they are, I think, which is very important. Academically, yes, I think most of our kids will do well because we are Yes, all the kind of parents. We come from that yes. Indian origin where how we've gone through life, And and we how to understand that. balance, yeah, and how to Exactly. balance between academics and being authoritative कि नहीं भैया अच्छा career ही लेना है, no matter what. No matter what. Absolutely, absolutely. So it was a beautiful session. I want to attend more of these. So Bhavna, Aisha, get आजा Bhavna आजा more घर on पे board. आजा. हाँ, लेके आएंगे भावना को वापस फिर से. Yes. Done. Thank you so much. Thank you Thank all. you. And Supriya, beautiful little boy, congratulations. Yeah, yes. एक और He's बार our दिखा दे bloom. भाई अगर सोया नहीं है तो. रुक जा, मैं अगर स्पॉटलाइट इस में उम्र डालती पे हूँ. वो ऐसे सेशंस अटेंड कर रहा है तो he is going to do wonders in life. नहीं यार, इसको नींद Yay. आ रही है बेचारे को भी. He's like, Looking oh, cute face. WHH के आंटीज को देख ली मैंने, हो मासिस गया, को. बहुत ओवर हो गया अभी उसके लिए. Actually, my daughter has gone through all this. She has attended all the business meets personally. She's gone to me and Yeah, all the NICUs yeah. when I've taken the initial impressions. She sits in front of emergencies when I leave her with Sagar and go for some appointment. But some emergency comes, so she still sits there in front of emergencies, and she's seen all the kind of people rushing and the pains, and how difficult the world is. So she has been everywhere with me, and I think that has made a great impact. She's a very compassionate child. Yes, She yes. she's That's it. very understanding. She'll never say my mom is on phone. She'll always say my mom is working. So even if I'm in Instagram, she has somehow the idea that she's on phone means she's working. Let's not disturb her. So And this that is I think comes in. yes. Always involving them in whatever you're doing and making them clear right from the newborn age. They're very smart. They understand. So once they are a part of it, I think they're more cooperative. All of a sudden, if you want to attend a meeting one day and tell him, you stay home, I'm going for a meeting, he does not have an Exactly. idea what you're going there for. For Exactly. all he knows, you're going for playing. मुझे घर पे house arrest करके. Then he'll not cooperate. So hopefully he Yes. understands this is what we do all He day. will understand. उसकी बड़ी sister है ना, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए. उसकी बड़ी सिस्टर वो छोटू सी है, बट वो सुप्रिया की जेरोक्स कॉपी है भाई, नहीं इतनी वो मैच्योर्ड बड़ी सिस्टर माशाल्लाह. है भाई, अब वो बड़ी बहन है, वो कितनी भी छोटी हो. All right guys, so I think everybody is sorted. सबने अपने questions पूछ लिए. वैसे मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह इसको पोस्ट करूं पिछले 4 वालों के साथ. पिछले 4 अभी पोस्ट करने हैं. यस, उसके साथ एक 5वां वाला पोस्ट कर दूंगी इंशाल्लाह. And you'll get this on YouTube. And until we meet again, we have Thank one. you so much, guys, for being patient and listening to me. Thank you. I love being here as always. Thank you, Bhavna, for such a lovely Mana. session. Thank you. Love you Thank guys. you. Bye, Vyom. Bye, Bye. Charlotte. Bye, Alia, Bye, Namrata, bye. Benedict. Love you, Bye. Priya, Vyom. Sara. Bye. We have Sara also here today. I didn't know that. Bye, Lubna. Huh? Bye, Neil, Shrivani. See ya. Bye, Kevna. Take care. Bye.